Good morning, everyone. Hope everyone is doing fine. So, let us start with today's session of structural analysis. Now, earlier in the first module that we were discussing related to the analysis of trusses and three-hinged arches, we had discussed that what are different types of trusses, how to analyze a determinate truss by method of joints and method of sections. We have discussed what is a three-hinged arch, what is the determinacy of a three-hinged arch. Also, we have discussed how to analyze a determinate three-hinged arch if it is a parabolic arch. Okay. Now, the next points that we are going to consider today are going to be related to analysis of this particular three-hinged arch, but there was two concepts which were remaining to be taught. So one concept was the concept of radial shear. Okay, so today we are going to discuss about radial shear, what is radial shear, and normal thrust. So please keep your notebooks and calculators ready and start annotating with me. Okay. So today we are going to start with a problem in which we are going to determine the normal thrust and radial shear. Okay. So normal thrust and radial shear, what are those things and how these things come into the picture? So let us start with a simple diagram. Okay. Suppose this is your parabolic arch. Okay, this is your joint A, this is your joint B. Okay, so obviously we determine the horizontal reaction and vertical reactions. Okay, there is a point at the top which is called the crown. Okay, where there is the third hinge. Now this third hinge doesn't necessarily mean that it should be at the crown. In three hinged arches, the hinge can be anywhere. So we are considering a symmetric situation over here. That's why we are putting this internal hinge at the top, at the center. If we are considering a geometrically unsymmetric system, then we would have put this internal hinge anywhere else. Okay, that could have been done. The solution, the methodology, everything would remain same. Okay, only thing is that in symmetric arches, whether there is loading or something, the bending moment diagram and some properties are predictable. But when it is unsymmetric, then the things are not predictable. But they are determinate. Means you can calculate, you will be able to find out its answers. Now suppose I consider a section over here. Okay, suppose this is section XX. So at this section, I want to determine the bending moment. I want to determine the radial shear, and I want to determine normal thrust. Okay, these are three things which are possible that can act. Now what do you mean by all these three things? जब आप लोग मॉस के अंदर पढ़ते हैं कि तीन तरीके के डायग्राम होते हैं या तीन तरीके के स्ट्रेसेस जो है वो सेक्शन के ऊपर एक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज व्हाट? इट इज द axial force diagram we make. Okay, so axial force which is acting on this section, which is compression or tension. Then second type of force or stress that can act on the member is shear force, which acts perpendicular to the neutral axis. Okay. Then there is third type of stress, which is acting in terms of bending. If the member is bending or if the member is experiencing a bending moment or bending stress, then there is going to be a bending moment and bending stress acting on the section. If it is if the bending moment is there, shear force is certainly going to be there. Okay, so shear force and bending moment are related to one another, but the what we can say, the internal
forces, or we can say the normal thrust, is independent of these two. Okay, now let us see over here. Suppose this is your section, so let us consider this section and let us erase everything else. Okay, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये सेक्शन है, इतना हमारे पास में हमारा जो है वो ब्रश है, बाकी का हमें अभी फिलहाल में ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लेट अस मेक, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है ऐसा कर्व होते हुए, तो ये पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट पे इसका स्लोप क्या रहेगा? इफ आई मेक द टेंजेंट ओवर हियर, ओके, लेट मी मेक अ टेंजेंशियल लाइन. Okay, this is the tangent, this is the slope of this particular member. So try to understand that on this slope there is a force which is acting, or you can say इस particular point के ऊपर एक force है जो act कर रहा है. This is called the normal thrust. This is called the normal thrust. Okay, which is along the tangential line, which is along the tangential line. मतलब आपका जैसा भी कर्वेचर रहेगा, वो कर्वेचर के हिसाब से जो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट के हिसाब से आपका यहाँ पे लाइन रहेगा. ओके, सो अलोंग द लाइन ऑफ द टेंजेंट, अलोंग द स्लोप मीन्स बिल्कुल सेक्शन के ऊपर जैसे हम कंप्रेशन या टेंशन करते हैं, तो सेक्शन के अंदर किस तरीके से कंप्रेशन टेंशन एक्ट करेगा, इन अ सिमिलर डायरेक्शन, इन अ सिमिलर वे. नॉर्मल थ्रस्ट इज काइंड ऑफ एन एक्सियल फोर्स. नॉर्मल थ्रस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सियल फोर्स. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसको कितना कंप्रेशन या टेंशन फील हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल थ्रस्ट. ना ऑब्वियसली हमारा मेंबर ऐसा स्ट्रेट नहीं है. अगर स्ट्रेट होता तो मेंबर के अंदर हम लोग अलोंग द लेंथ ही कंप्रेशन और टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन बिकॉज माय मेंबर इज इंक्लाइंड, तो उसके हर पॉइंट के ऊपर एक्सियल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा. उसके हर क्रॉस सेक्शन पे उसका एक्सियल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि उसका हर सेक्शन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है ना. जैसे जैसे आपका सेक्शन यहाँ पे बढ़ते जाएगा या अलग अलग उसके स्लोप के हिसाब से जाते जाएगा, वैसे वैसे आपका सेक्शन रहेगा. तो जैसा सेक्शन रहेगा उस सेक्शन के हिसाब से उसका एक्सियल फोर्स डायग्राम रहेगा. सो इफ यू कैन सी इन द वीडियो, आई एम शोइंग यू द सेक्शन as well as I am showing you the direction of the normal thrust, or you can say the actual force which is acting on the section. Okay, are you able to see this? Okay, so my hand represents the cross section and the pen represents the direction of the axial force. So pen is basically moving along the curvature. Okay, so it is tangential to the wherever we are going to consider this section, and this is the section. Okay, now in a similar fashion, try to understand how shear force acts. Okay, so shear force acts perpendicular to that. Okay, so shear force acts perpendicular to this. So this is perpendicular to this. Okay, perpendicular to the NT. So over here, this force which is acting along this particular line is called radial shear. Now why is it called radial shear? ये radial word कहाँ से आया? Try to understand. ये कर्व है, कर्वेचर है, ठीक है. कर्वेचर के ऊपर हर पॉइंट, किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट को लिया जाए, चाहे उसका रेडियस चेंज होते रहता है, बट इफ इट इज अ कर्व देन देयर इज गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ रोटेशन. जो भी उसका सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा वो हमें कैसे मिलेगा? उसका जहां पे भी उसका स्लोप है, या ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, तो एंटी क्या दे रहा है मुझे? टेंजेंट लाइन के ऊपर. सो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहेगा दैट इज रेडियस. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहेगा दैट मीन्स रेडियल, मीन्स इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स. रेडियल का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ द shear फोर्स. नाउ इन द सिमिलर फैशन as you saw over there, you can see now my hand shows you this section. The pen is showing you the direction of the normal thrust, and also the direction of my hand gives you the direction of the radial shear. Okay, is it clear to you? Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone who has any sort of doubt can let me know. You can put it in the chat box as well.
ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड कि हर सेक्शन पे shear फोर्स रहेगा, हर सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट रहेगा और हर सेक्शन के ऊपर एक्शियल फोर्स रहेगा। जो बेंडिंग मोमेंट है उसको तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट ही बोलते हैं, जो shear फोर्स है उसको हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं रेडियल shear। रेडियल वर्ड को जो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है दैट इज टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर shear फोर्स व्हिच इज इन द रेडियल डायरेक्शन। मींस जहाँ पे भी आप टेंजेंट बना के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो आपको shear फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, लाइक दैट। देन देयर इज दिस। नाउ try to understand, huh? There is something, how to calculate, we'll do it in the problem, पर इसकी डायरेक्शन समझ लो अभी। ठीक है, ये जो shear फोर्स और ये है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, योर एनटी एंड your NT and RS are not perpendicular or horizontal or vertical every time. Try to understand. आपकी जो नॉर्मल बीम होती है, बीम के अंदर आपका जो एक्शियल फोर्स होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग इन दी डायरेक्शन, ओके, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड द शियर फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपके नॉर्मल बीम के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दी कर्वेचर इसका जो है डायरेक्शन वो चेंज होते रहेगा। इफ यू सी, हमने जो एक्स एक्स बनाया है ये वर्टिकल लाइन है, और अगर रेडियल शियर और नॉर्मल टेंजेंट को आप लोग देखेंगे तो दे आर एट अ सर्टेन एंगल। सो लेट मी जस्ट मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर यू। So this angle that you see, which it is making with respect to horizontal, the angle that they make with respect to horizontal is the slope और द कर्वेचर। स्लोप या बेसिकली कर्वेचर, ये अगर हमको देखना है तो कि कैसे मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ dy बाय dx। ओके, tan थीटा इज द स्लोप। सो थीटा अगर एंगल चाहिए मुझे तो वो कैसे मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ dy बाय dx। ओके, नाउ y कैन बी एन इक्वेशन, x कैन बी एन इक्वेशन, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह भी रहेगा यहाँ पे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओवर हियर दैट व्हाट इज नॉर्मल थ्रस्ट एंड व्हाट इज रेडियल शियर। ओके, सो रेडियल शियर का मतलब क्या होता है कि शियर फोर्स उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, रेडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नॉर्मल थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट इज द एक्शियल फोर्स जो वहां पे एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, और जो नॉर्मल है दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द रेडियल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू समथिंग। ओके, सो नॉर्मल यहाँ पे किसको नॉर्मल होगा, यहाँ पे शियर को, रेडियल शियर के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा उसका। ओके, सो दैट इज इट। Now, let us proceed with the problem. Write down. Now, I am going to expect a few things out of you guys, okay? Because we have already solved so many problems related to arches and specifically parabolic arches. So, calculating the reactions and stuff should be very much used to you guys, okay? So, let us first write down the problem. A three-hinged symmetrical parabolic arch is loaded as shown in figure. A three-hinged parabolic arch is loaded as shown in figure. Calculate first support reaction, then maximum bending
moment in portion AC and BC. Draw BMD. Then third is normal thrust and radial shear force at D. Okay, so this is the question. Also the diagram is given in the problem. So let us make the diagram. Okay, so this is the diagram, this is the question, so this is the total overall question. Okay, now for this particular problem, we'll keep this diagram over here and let us start with the solution part. Okay, in this solution we are going to again redraw the diagram, but we are going to now make the free body. Okay, so we are basically making free body of okay, so the free body diagram will look something like this. So over here at point A there is reaction VA, at point B there is reaction VB, there is horizontal reaction or thrust or horizontal reaction, and both the reactions are going to be same for a symmetric thrust. Symmetric thrust रहेगा तो H के वैल्यू दोनों के सेम रहेंगे. ओके, सो इतना पार्ट हमारे लिए क्लियर है. और क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर? ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, दिस इज C. Over here this is 24 meters, the total distance from here to here. Then there is point D, but currently the point D is not of that significance to us. Okay, this is the section where the D point is sitting. This is the UDL of intensity 20 kilonewton per meter. Okay, so first thing is to find out the support reactions. Okay, so first thing that we are going to do is determine the support reactions. How will we get the support reaction? First we are going to do summation of moment at A is equals to 0. Now because when we are doing summation, you remember that clockwise is negative and anti-clockwise is positive. Okay, this you already know. When we are doing summation, at that time clockwise and anti-clockwise is the sense of direction for us, and when we are doing bending moment, at that time you have to remember that on both the sides, if it is trying to bend in upward direction, then it is positive,
In both these sense, if it is trying to bend in downward direction or hogging bending moment, it is negative. Okay, so this is the sign convention. Please remember the sign convention. Okay, so summation of moment at about point A. If we go for summation of moment at about point A, then for that, uh, what are the forces which are going to be acting? So there is going to be this 20 kilonewton force, 20 kilonewton per meter. So total load converted into point load will be 20 multiplied by total distance is 12 meters along which it is acting. The half distance will be 12. Okay. Then the point of action of the force is going to be total 12 by 2. So this is acting in clockwise direction. So we are going to consider, sorry, this is acting in anti-clockwise direction. With respect to A, it is going to act in the anti-clockwise direction. So it is going to be, uh, sorry, it is acting in clockwise direction. With respect to point A, if we try to rotate the 20 kilonewton UDL point load, it is going to act in the clockwise direction. So for clockwise direction, we are going to take minus and plus other force which is going to add. This horizontal force is passing through A, so that is not going to make any difference. This VB is going to act, so plus VB into 24. 24 is the perpendicular distance between the line of action of VB and this. So into 24 is equals to 0. Only two forces are there. Now from this you can get the value of VB. What is the value of VB you are getting? You can put it in the chat box. What is the value of VB you are getting? Please check your answers. What is the value of VB you are getting? Sir, 60. 60. 60 others. So write down in the chat box, okay? Because currently the speaker that I have are not that powerful that I can listen it to you, okay? So try to put it in the chat box. I will be continuously checking the chat box, okay, for your answers. Please calculate the remaining reactions. Sorry guys. So let us continue. So we have determined the value of VB. Okay. So after determining the value of VB, we can go for summation Sir, Fy is equals to 0. Yes, say.
यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना? Yeah, anti-clockwise is positive and clockwise is negative. Have I हाँ तो done फिर something wrong? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है ना? Anti-clockwise positive, clockwise is negative. तो आपने निगेटिव लिए हैं, Yes. आपने निगेटिव लिए थे क्या? Can you speak a little bit louder? फिर आपने यूडीएल निगेटिव के लिए थे इधर? UDL का जो आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन, so UDL is acting in the downward direction. Okay, so if I make the direction means ये force किस तरीके से A point के along इस member को rotate करेगा, so it is going to rotate like this. Okay, this force. So if the rotation happens in this direction we'll call it as clockwise direction. So clockwise direction I have considered as negative over here. Okay. सिमिलरली वीबी का अगर हम देखेंगे तो वीबी मेंबर को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में. सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर वीबी is going to be like this, which is anti-clockwise. Hence, I have taken VB as positive. Okay. कैसे? Is it clear, Sabrine? यस सर. Okay. So basically, when we are using the UDL over here to determine the moment, we are not actually taking the complete UDL. We convert the UDL into a single point load. That point load is your 20 multiplied by the distance 12. Are you getting it? So in this formula as well, we have taken that as into consideration, 20 into 12. Okay, which is the converted point load of the UDL. Okay, and then that point load with because we require the point of application of that force. तो क्योंकि यूडीएल एक लंबे स्पैन के ऊपर रहता है, उसका इक्विवेलेंट निकाल के हम वो पोजीशन डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट आएगा. तो वो इफेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी? उसके सेंटर पे होगी, जो हमने यहाँ पे 12/2 से निकाला. ओके, सो दैट वे वी हैव यूज्ड इट इनटू द फॉर्मूला. ओके, सो नाउ determining the other support reactions, summation Fy is equals to 0. So for summation Fy is equals to 0, we have forces like your Va plus Vb minus 20 into 12, which is the UDL which is acting in the downward direction. Okay, equal to 0. If we substitute the value of Vb over here, so Va minus plus 60 minus 240 is equals to 0. Therefore, Va is equals to 180 kilonewton. Okay, is everyone getting this same answer? Then to determine the value of horizontal thrust, what do? We take bending moment. Okay, we take bending moment at C, and because it is an internal hinge, we know that bending moment at C is going to be 0. Okay, so there is a difference between summation. Summation of moment at every point will be 0, but bending moment, which we consider the left hand side or right hand side of that particular part, is going to be 0 only if it is an internal hinge. Okay, for any hinge position or condition. So for that, we can write down the bending moment for C, that is equal to your RB. We will consider the B support part. Okay, we are going to consider the portion BC, because portion BC doesn't have a UDL, as well as over there we have only two forces which are acting. On other side there are three forces which are acting. So moment equation will have three parts. So it's better to go for lesser forces because it will give you better result. Okay, and less chances of making a mistake. So RB into 12. Now the if you see this part, okay, which we are considering, this is C, this is your RB, and this is H. So when we consider bending moment over here on this section, when we consider bending moment, so RB is trying to rotate in upward direction. Okay, so when RB tries to rotate in upward direction, we consider that as positive. Okay, and H, if you see for H is trying to rotate. If this was a beam, okay, और ये H है आपका, okay, और ये point C है, तो इसका direction of rotation कैसा होता है? Try to understand. So the direction of rotation would have been
downward. It would try to press the beam in downward direction, or you can say in the clockwise direction. Okay, so for right hand side, this is the sign convention. We already know that this is positive and this is negative. Okay, I have made you that hogging and sagging ones. So coming back over here, minus h into, what is the distance between h and this? The total height of the parabola is 5 5 meters. meters. Okay, so h into 5 and rb into 12. 12 is the distance from here to here. Okay, 12 meters and 5 meters. So this is equal to 0. Solving it, rb का value कितना है? rb we have determined as 180. Nah, sorry, rb I think is 60. 60 into 12 minus h into 5 is equals to 0. Therefore, my horizontal thrust is equals to how much? Please check if you are getting the same answer. Okay, so it is clear up to this point. Okay, so we have calculated the value of horizontal thrust in this. Now we need to determine the bending moment. Okay, now the second part of the problem is determining the bending moment. Okay, so bending moment. Now bending moment also there are two parts. You have to determine for AC, you have to determine for BC. Okay, so first we'll consider for AC. Okay, so for AC, now let us make the diagram. So let us make the section for AC. So suppose that this is your parabola, this is point C, this is point A, this is your VA, which is equals to 180 kilonewton. This is your horizontal thrust of 144 kilonewton. There is a UDL which is acting on this part, which is having a magnitude of 20 kilonewton per meter. Let us consider a section. Okay, now this section x, which is acting suppose at point D. Suppose this is point D. So इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे? इसका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से x, इसका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से y. Vertical distance will be y, horizontal distance from the support is going to be x. And this D is a point where maximum bending moment along AC is going to act. AC के अंदर का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो इस डी पॉइंट पे एक्ट करेगा, ये हमने ऐसा अज्यूम किया है, अभी हमको पता नहीं है, विल डिटरमाइन दैट. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, सो लेट अस राइट डाउन moment equation for that. So bending moment at D, obviously we cannot go for this side, left and right hand side, so we'll consider the left hand side. Okay, so considering left hand side, what is going to be there? So for VA, if you see, the VA is trying to rotate in upward direction, so VA का आपका कैसा मिलेगा? Positive. So plus VA into the distance is x. VA के साथ में कितना डिस्टेंस है, कितना लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x. So VA into x. Then next is h, horizontal wala. So this truss is trying to rotate in this direction. It is trying to rotate point D in this direction. Okay, so that's why we are going to take minus h into the distance is going to be y. Now there is also one more factor, which is this part UDL. ये part UDL यहाँ पे act कर रहा है. So UDL is acting in downward direction. So it is trying to rotate. If I write down for UDL, it is trying to rotate in this direction. So minus 20 into x, the converted point load into x by 2. So this is your total moment equation for bending moment at D. So let us substitute values in that. So 180 into x minus h into y minus 20 x square by 2. Okay, so let us simplify the equation. That is equals to 180x minus h into y minus
10x square. Okay, so this is your simplified form of the equation. Now what do we have? We have a condition on y is equals to 4hx L minus x upon L square. So y is equals to how much? Y is equals to 4 into total height is 8. Sorry, total height is 5 multiplied by x bracket total length. Total length of that parabola is 24 minus x divided by 24 square. Okay, so let us use this into the equation. Okay, so we can simplify this 20x 24 minus x divided by 24 square. So let us put the value of y into this equation over here. So this is still going on, bending moment at d. So therefore bending moment at d will be equal to 180x minus sorry, we have the value of h with us, so we'll substitute the value of h. 144 multiplied by 20x 24 minus x divided by 24 square minus 10x square. Okay, so simplifying the equation, we have bending moment at d will be equal to 180x minus, now we are going to do this 10x square over here, so we'll take 10x square over here and we'll simplify this bracket over here. Okay, so for this bracket what we are going to do, 144 into 20 into 24 like that, so that is going to be minus 120x plus 5x square. Okay, please check this equation whether it is correct or not. Please simplify and get to this equation. Is it okay? Is it correct? Yes, sir. Okay. See, you cannot skip steps, huh? Because I have to solve 3 and 4 problems in this session, so I'm just doing the necessary. But you be very precise, okay? You have to write down all the steps of simplification, because there are chances that when you're solving an unsolved problem which you don't know, there is a chance that you might make a mistake. Okay, so to avoid that, we need to consider that. So bending moment at point D is 60x minus 5x square. Okay, so this is the equation for bending moment at D. This is the equation for bending moment at D. Where is the location of D? We still don't know. Okay, so location of D is also unknown to us, but still we have an equation over here because we are just trying to determine. Now for maximum bending moment, for maximum bending moment, what we have to do, your bending moment at D, you have to derivate with respect to dy dx and equate it to 0. So if you take the derivation and equate it with respect to 0, you will get the location for the maximum bending moment. So therefore this is equal to dy dx into the bracket 60x minus 5x square is equals to 0. So 60 minus 10x is equals to 0. So x is equals to 6 meters. When we have x is equals to 6 meters, we can substitute this into this equation, which is for the bending moment, and we can get the value of bending moment. Okay, so bending moment at D is equals to 60 into 6 minus 5 into 6 square. What is the value of bending moment at D? D is not a specified point. I'll just notate it as D. Okay, कहीं भी हो सकता है. D प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, हमने अज्यूम किया है कि एक ऐसा पॉइंट है D. Okay, so what is the value of bending moment at D? 180. 180. Okay, so 180 kilonewton meter. This is the bending moment at D. So this is your maximum bending moment in AC. AC के अंदर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है? एट पॉइंट डी है, जिसका लोकेशन हमने डिटरमाइन किया है कि 6 मीटर है, और वहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है 180.
Okay, so let us proceed further. Okay, so next thing that we are going to determine is maximum bending moment in BC. Okay, so for BC part, this is your C and this is B. ओके, यहाँ पे कोई यूडीएल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, दिस सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट एंड एट अ हाइट y। देन यहाँ पे सपोज इस पॉइंट का नाम मैं ई दे देता हूँ कि ये ई पॉइंट है जिसके ऊपर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूँ। ये ई पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, जिसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ओके, लाइक दैट। सो ये एक्स और वाई इसके ये हो गए, और कुछ सपोर्ट रिएक्शंस है हमारे पास में। सपोर्ट रिएक्शन एट बी इज 60 किलो न्यूटन। ओके, एंड द थ्रस्ट ओवर हियर इज एच 144 kilonewton. So these are the values that are with us. So let us write down bending moment equation. So bending moment at E is equals to, now our VB is creating moment direction. See, the direction created, direction of moment created is upward. So we are going to consider plus VB into the distance from here is x. Okay, so plus VB into x. Then what about H? H is going to create moment in this direction. So this direction is downward direction, or you can say the clockwise direction, but for this right hand side sign convention, this direction is negative. Okay, so for this direction we are going to consider it as minus h into the distance is y. Okay, only two forces, so two moment are going to be there. That is equals to the value of VB is 60x, 60 into x, 60x minus 144 into y. Okay, so if you see over here above, so over here 144 into y, this 144 into y, this portion was simplified by us as 120x plus 5x square. This complete problem 144 into y was resolved as 120x plus 5x square. So either you can simplify or you can go for the directly whatever we have earlier calculated. Okay, so you can put that also. So this 144 into y can be written as 60x minus 120x 5x square. Okay, so plus 120x, sorry, minus 120x plus 5x square, minus 120x plus 5x square, minus 120x minus 120x plus 5x square. So plus 60 minus this is going to give us 5x square minus 60x. This is the bending moment at E. For maximum bending moment d m by dx is equals to 0. So taking dm by dx is equals to 0, what is the answer we are going to get? D by dx of 5x square minus 60x is equals to 0. So 5x square will become 10x minus 60 is equals to 0. Okay, so therefore x is equals to 6 meters. Okay, we're getting the answer, x is equals to 6 meters. Now substituting this into the equation over here. Okay, so substituting into the equation, we have bending moment at E is equals to 5x square minus 60x.
that is equals to 5 into 6 square minus 60 into 6. So this gives you how much? Okay, please check everyone. Everyone is getting the minus 180 kilonewton meter. Okay, so minus 180 kilonewton meter is uh, the maximum bending moment. Now you will say, sir, minus वाली चीज maximum कैसे हो सकती है? Try to understand. Over here the minus is representing the sign. जैसे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया तो that means it was sagging bending moment. तो यहाँ पे minus 180 is hogging bending moment. तो hogging के हिसाब से हम लोग उसको determine करेंगे. Okay. Now let us move ahead to another part, and then finally we are going to make the bending moment diagram for this. Okay. So let us move ahead to radial shear. Now we can make the bending moment diagram also if you want right now. Okay. So suppose this is your point A, this is your point B. Okay, all the distances and everything. This is 24 meters from here to here. Okay, obviously this is a bending moment diagram, so we are not going to show any other force which is represented over here. Okay, now let us make a this is point C. So at a distance of 6 meters, so at a distance of 6 meters, suppose I'm going to make a section over here, and also at a distance of 6 meters from support. So 6 meters from support and 6 meters from support. Over here we have to make a perpendicular. Suppose we make a tangent line over here. We make a tangent line over here. So let us make a perpendicular line, because whenever we make the bending moment diagram, ये हमारा बीम है और ये bending moment diagram है, तो ये bending moment को हम लोग हमेशा perpendicular plot करते हैं, ठीक है? जो हमारा slope होता है उससे हम लोग perpendicular plot करते हैं. If we are plotting it in the perpendicular fashion like this, so अगर ये beam, is there something you would like to say? Mubashir, is there something you would like to say? No, sir. Okay, so over here you can see that this is the perpendicular line for the slope. तो ये जो हमारा perpendicular line है इसके ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा रहेगा, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट को हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं. ओके, ऑन दिस लाइन हमारा नेगेटिव रहेगा. ओके, सो द वे दैट वी मेक दिस पर्टिकुलर केस, सपोज यहाँ पे हमने इसको वैल्यू डाला तो कितना 180 किलोमीटर मीटर पॉजिटिव. Okay, so join this using, because this is a UDL, try to understand that this is because of the UDL from this portion to this portion. So this line is going to be parabolic. Okay, similarly ये यहाँ से यहाँ तक भी parabolic रहेगा. Okay, so just let me make this curve like this. So this curve is going to be like this. So this is going to be parabolic. Okay, from this point to this point. From this point onwards, there is no particular UDL or something which is active. Okay, that means from point C से लेके B तक का जो वेरिएशन रहेगा बेंडिंग मोमेंट का, वो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा.
So there is going to be a straight line acting from here. So this point which is coming over here will have a bending moment of 180 kilonewton meter. Okay, so this is your point B and this is your point E. Is it clear to you? Do you understand this? Is it clear to you how to make bending moment diagram for arches? Yes, sir. Okay, so now let us proceed to the last part of the problem, which is the radial shear. ओके, सो रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि कहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है. ओके, so that location is given. So location is 5 meters from the left support. The location for this particular section is given to us and that location is 5 meters from the left support. Okay, so let us take that particular point and then consider it. तो देखो इसका किस तरीके से बनेगा ना, बहुत ध्यान से देखना आप लोग. ओके, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और बिल्कुल ध्यान से देखें कि हम लोग इसको किस तरीके से करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शंस रहेंगे, बहुत सारे आपको कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन एकदम एक ही टाइम पे सभी चीज़ का आने वाला है, मैकेनिक्स, सॉन्ग वगैरह सब चीज़ का. तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है. सो सी, suppose this is my point C, this is my point A. AC के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग सेक्शन लेने वाले हैं. तो चलो मैं सेक्शन को यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेता हूँ. ओके, तो ये यहाँ पे मेरा सेक्शन आने वाला है. ये सेक्शन का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो 5 मीटर्स है. मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे मेरे रिएक्शंस वगैरह हैं विच इज़ 60 kilonewtons and 144 kilonewton. Also हमारे पास में एक यूडीएल है. सर BA 180 है. जी, BA 180 है. BA is 180. Sorry. I'll make the changes. Okay, happy? 180 kilonewton. Now over here there is a UDL which is acting. There is a UDL which is acting from A point to this point, intensity of 20 kilonewton per meter. But try to understand only this much part of UDL is important for us. हाँ? ये 5 मीटर वाला पार्ट ही important है अभी, ठीक है? Please remember this. Now what we are going to do, सपोज ये मेरे लिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ. ये मेरा सेक्शन XX है जो मैंने कट किया है यहाँ पे. इसके अबाउट में चीज़ें डिटरमाइन करूँगा. चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग F. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं सेक्शन को यहाँ पे काट देता हूँ. ऑल एवरीथिंग इज इररिलेवेंट टू मी. ओके, all these things are irrelevant to me. Okay, so let us get rid of all these things. Okay, now let us make the normal and tangent to get our directions. So over here this is what your tangent. Okay, and perpendicular to the tangent what do we have? We have our, थोड़ा सा साइड से चला गया, सॉरी. ओके, सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये डायरेक्शन किसका है? ये नॉर्मल थ्रस्ट का डायरेक्शन है. और ये किसका डायरेक्शन है? रेडियल शियर का डायरेक्शन है. तो चलो हम लोग इसको कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं. अभी फिलहाल में हमारे लिए ये चीज़ें अननोन है, ठीक है. मुझे नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर पता नहीं है, तो मैं नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर का जो डायरेक्शन है ना, सॉरी जो नोटेशन है उसको मैं ज़रा रेड पेन से लेता हूँ. ओके,
सो ये मेरे लिए अननोन है, नॉर्मल थ्रस्ट अभी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ओके, सो ये नॉर्मल थ्रस्ट का डायरेक्शन हो गया। ओके, और रेडियल शेयर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो क्योंकि लोड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो शेयर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी हम लोग रेडियल शेयर। ओके, सो रेडियल शेयर का डायरेक्शन जो है वो हम लोग डाउनवर्ड अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? ये हमारे डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं आपको? नॉर्मल थ्रस्ट के, रेडियल शेयर के। दिस इज टेंजेंट। ओके, okay, this is tangent to the curve. Okay, and this direction is radial, perpendicular to tangent. Okay, is it clear? इस तरीके से हमें अभी यहाँ पे बनाना है। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा ये जो 144 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन में अभी ये जो टुकड़ा है AF, this particular piece AF is also in equilibrium. See, I can break the system into multiple pieces, okay, and all those pieces are going to act in a similar fashion. Okay, so if I say that I'm only considering AF, then my complete forces are being nullified by NT and RS. My total forces are getting nullified by normal tangent and RS. Okay, now the angle that this particular force is making with respect to the horizontal, this is horizontal. So with respect to horizontal, the angle which it is making is theta. The angle that this particular is making is theta. So there are multiple ways of solving this. One way is I can consider a hypothetical x and y and then we can solve it. और I can say कि ये मेरे unknown forces हैं और चलो मैं अब इनको determine करता हूँ. Okay, so I can use summation fx and fy to get. Now see, how many unknowns do I have over here? I have one nt as my unknown and another rs as my unknown. So I have two unknowns. Okay, and I require only two equations to solve that. Using summation fx and using summation fy, I can get these values. Also, there is one theta which is also unknown to me. But getting the value of theta doesn't require me to do summation fx and fy. For calculating the value of theta, I already have the tan theta function. Okay, so let us use that. So let us see how we can get the value of theta. Okay, so tan of theta is equals to dy by dx. Okay, so that is equals to d by dx of y. What is y? 4hx l minus x upon l square. This is the value of y. Are you getting it? ये समझ में आ रहा है? tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है. Sorry, tan theta is the slope. So tan theta is equals to y by x. So dy by dx. Okay. Now we already don't know the value of x over here. Okay. Sorry, we know the value of x. We don't know the value of y. So we cannot directly take the value of y. So we are going to substitute the value of y in terms of this. So that is equals to, or we can calculate the value of y in terms of x. So what is the value of y we are going to get? Sorry, what is the value of this equation we are going to get? D by dx. We can go for y by x as well. Okay, so don't worry about that. Y by x and dy by dx is going to give you the same answer. So coming back to this particular equation, this is equals to d by dx. Now 4 into h, how much is the total height? Height is 5 meters and value of x is 5 meters. Then L, how much is the total length? 24 minus 5, which is the sorry, first we need to derivate it. So we are going to keep all the x values as it is, then afterwards we are going to put the value of x. So first we are going to have 4 into total height
is 5 meters into x in the bracket 24 minus x divided by 24 square. So let us simplify the equation. This is equals to d by dx 20x 24 minus x divided by 24 square. That is equals to, now 20 into 24 is, this is 480x minus 20x square divided by 24 square. So taking the differentiation, we have 480 divided by minus 40x divided by 24 square. So I have put the derivation of x over here into the equation, and I have got the value of dy by dx. This is basically your dy by dx, which is equals to your tan of theta. Now over here, if I put the value of x as 5, so what do I have? 480 minus 40 into 5 divided by 24 square. What is the value you are getting for this? Please put it into the chat box. 0.486. Okay, so the value you are getting is 0.486, but this is tan theta. I want the value of theta. So to get the value of theta, we have to do theta is equals to tan inverse of 0.486. That is equals to how much? 25.92. Okay, now depending on how much you are rounding it off, or you are using it as answer in your equation, you can get the accuracy. The accuracy of your results can vary. So I have the value of theta as 25.92. So try to understand what I'm trying to do over here. Okay, so this is equal to 25.92. Okay, so there are going to be two components of nt, and obviously this is going to be 90 minus theta. Okay, 25.92 का जो रहेगा 90 माइनस ये वाला वैल्यू. ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास में इसका एंगल रहेगा, आर एस का एंगल. ओके, सो नाउ सी इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन. इफ यू वांट द डायरेक्ट फार्मूला आल्सो, यू कैन गेट द डायरेक्ट फार्मूला एज वेल. अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये v है और ये h है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, विच इज for normal thrust and radial shear. For normal thrust, it is going to be v sin theta plus h cos theta, or you can have v cos theta minus h sin theta. But I don't want you to go into the formulas. फॉर्मूले में हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग हमारा बेसिक मैकेनिक्स का स्किल लगाएंगे, और बेसिक मैकेनिक्स का स्किल लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, so for doing that, let us
ओके, तो ये हमारा अभी फ्री बॉडी डायग्राम है, हमने वहाँ से इसको फिर से लेके आए हैं। खाली जो थीटा का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 25.92 जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। अभी देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू अभी मेरे लिए नोन है, मेरे पास में सिर्फ दो अननोन फोर्सेस हैं और दो इक्वेशन है। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व इट, सी summation f of x is equals to 0. So for doing summation f of x is equals to 0, now there is a simpler approach also. This, for doing this there is a simpler approach, but it will require more number of steps. So rather than that I am giving you a approach which is having a lesser amount of steps. Okay, so let us see कि ये हमारे से आपको समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग, मैं आपके साथ में दूसरे भी नोट्स शेयर करूंगा जिसमें और सिंपलर मेथड्स भी हैं। ओके, ये भी सिंपल ही है, खाली ऐसा है कि थोड़ा ध्यान से करेंगे ना तो दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, रेदर देन आप पहले एक एच और वी का वैल्यू निकालेंगे रिएक्शन में, फिर पूरे के पूरे फ्री बॉडी डायग्राम को रोटेट करेंगे विद एन एंगल थीटा, फिर उसके बाद में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा एच टी और वी टी जो है ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये एच टी और वी टी का जो एक्सिस है ना, यही एक्सिस मेरा एक्सिस है और ये लोग जो है ना ये लोग इंक्लाइंड है, मेरा एक्चुअल एक्सिस यही है और ये लोग इंक्लाइंड है। अगर इस तरीके से काम करूँ तो भी ये हो सकता है। ठीक है, सो नॉट अ बिग डील। सो हम लोग यहाँ पे अगर इसको कंसिडर करते हैं एज कि ये मेरा एक्सिस है तो क्या होगा, लेट मी मेक दैट एक्सिस फॉर यू ओवर हियर। ओके, तो इसी के डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाता हूँ एंड पैरेलल टू रेडियल शेयर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है इसका क्या एंगल बनता है, थीटा बनता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। नाउ सी, अभी जो मैं प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ ना, इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, जब कभी आप इस तरीके से एक बॉक्स रखा होता है और ये बॉक्स का आप लोग यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है नॉर्मल, और फिर आप यहाँ पे बोलते हैं कि म्यू एन इसका ये है, तो डब्ल्यू एक्ट कर रहा होता है इस तरीके से, तो आप उसको डब्ल्यू को रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग दी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये सेम इंक्लाइंड प्लेन वाला ही कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ओके, सेम इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट है। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्स एंड वाई जो है वो ऐसा है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा एक्स एंड वाई ऐसा है। ठीक है, दिस इज नॉट माई एक्स एंड वाई। अभी फिलहाल में मेरा एक्स एंड वाई कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट। सो अगर मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ तो कैसा होगा। ठीक है, लेट अस सी। सी देयर आर मेनी कंसेप्ट्स हैं। इसको रेडियल शेयर को निकालने के लिए आप मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को बहुत अलग अलग तरीके से खेल सकते हो। मेरे हिसाब से ये सबसे कम स्टेप में आंसर देगा, इसलिए मैं आपको ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपने ऑलरेडी मैकेनिक्स में लर्न किया है। आई हैव सीन पीपल हु आर फाइंडिंग आउट फर्स्ट टू डिफरेंट अननोन्स, देन उस अननोन को निकाल के फिर एक्चुअल अननोन निकालते हैं, एक्चुअल अननोन निकालने से पहले उसको रोटेट करते हैं। ये सब बेवकूफ़ी लगती है मेरे को। हम लोग इंजीनियर्स हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है और थोड़ा बहुत इतना विजुअलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू हैंड, अभी अगर फिलहाल में मैं आपके सामने बात करूं तो दिस इज माय एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज माय वाई डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज माय एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज माय वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पे टू टेक समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स करने के लिए ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, लेट्स सी। तो माइनस एच टी जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो मेरे एक्स डायरेक्शन के हिसाब से अभी माइनस में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो मेरा डायरेक्शन माइनस में। ये हमारे ऊपर है, माइनस प्लस कौन सा लेना है नहीं लेना है। एक डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो दूसरे को माइनस ले सकते हैं। ओके, सो माइनस एच टी, देन योर एच, एच जो है यहाँ पे आपका, सो इसको हम लोग कॉस थीटा लेंगे, सो प्लस एच कॉस ऑफ थीटा, एंड देन दिस वी ए। वी ए का अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, और इफ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन ओवर हियर, प्लस वी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू 0। सो एच टी इज इक्वल्स टू एच कॉस ऑफ थीटा
प्लस VA साइन ऑफ थीटा। अगर आप यही चीज़ को अब ऊपर जाके देखोगे तो जो आपका ये अपना इक्वेशन मैंने आपको लिखा के दिया था, सेम इक्वेशन यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू रीअरेंजिंग द टर्म्स वी हैव गॉट दिस। So let us substitute few values in this. What is the value of h? H is 144 cos of 25.92 plus VA is 180 sine of 25.92. So your horizontal thrust comes out to be how much? What is the value of horizontal thrust you are getting? Please put it in the chat box. Okay, so your normal thrust, I'm continuously saying horizontal thrust, but it is normal thrust. Okay, so normal thrust value you are getting 208 point something. Okay, 208 Sir, point. Is everyone getting 208.19 or is sir, there a different value for this? sir, why Yes. did we not consider the UDL? Uh, oh yeah, sure. We have to consider the UDL as well. Yes. Yes. We have to consider the UDL as well. Okay. Okay. So if we go by that UDL, we will have a vertical load over here. Okay. So let us put the UDL over here. So we are determining at a distance of 5 meters. So the UDL which is acting is going to act like this, okay, in downward direction, a point load. Okay, so this point load which is acting in downward direction will have a magnitude of 20 multiplied by uh, 20 multiplied by 5, because we are considering at a distance of 5 meters. Okay, so 20 into 5 will have a total load of 20 into 5. How much is 20 into 5? 100 kilometer. Okay, so this is also one of the forces. So we have to resolve this force into our x and y direction. Okay, into this x and y direction. So if we resolve this into this x and y direction, we are going to have one component over here, one component over here. Okay, so its horizontal component is going to be 100 cos of theta, and its this component is going to be 100 sine of theta. Okay, in the y direction. So putting that into the equation, we'll have a different answer over here. So the horizontal direction component is acting in the minus direction. So minus 100 cos of theta. So putting minus 100 cos of minus 100 cos of 25.92. So what is the answer now you are getting? Please check. It should be around 164.48 kilonewton. Okay, please check if you are getting the answer or not.
Have you checked? Are you getting the same answer? No, sir. What is the answer you are getting? Sir, Sir, 118.25. Yes. sir, actually I solved without tilting those and I am getting the answer as 164.48. And with this I am getting the answer as 118.25. You have solved without taking this 100. Okay. No, actually I have solved by components of normal NT and RS. Okay. I You have have taken the taken the component of component of those. NT and Yes, RS. yes, Okay. yes. And then you have you might have got a simultaneous equation, 164 point. Yes, yes. and you have solved using the 164.48. simultaneous equation. Okay. So for that you are getting 164 point. 484. Okay. Uh, See, So, the so, thing is that there might be, we have to check the problem. There might be some sort of mathematical mistake that we might have made. Okay. So that mistake we have to avoid over here. Now, the thing is that at the time of solving this particular problem, we have the reactions with us, 20 into 5, so 180. So we have that reaction. We have to consider the effect of UDL as well. Yes, we have to consider the effect of UDL. Okay. So without considering the effect of UDL, we should not be in a position to get our answer. Hmm. Um, I don't have a scientific सर यहाँ name पे here. साइन थीटा लेंगे तो वो आंसर आ रहा है. ये जो कॉस का आप बोल रहे हो, 100 कॉस की जगह पे अगर साइन लेते हैं तो साइन लेंगे तो ओके, बट अगर इसकी जगह पे हम लोग साइन लेते हैं तो हम साइन क्यों लेते हैं? साइन लेने के लिए दिस शुड बी 90 माइनस थीटा. ओके, सो this is this cos, this angle is theta. So the angle made by this with respect to horizontal is 90 minus theta. Yes, correct. Yeah. Okay. So if this angle is 90 minus theta, the direction with respect to this is going to be, if we are going to convert or resolve this force with respect to this, we have to put 90 minus sine of this. Okay. So yes. So the correct equation is this one. Okay. Now what you have done by taking the simultaneous equation part, that is also correct. There is nothing wrong with that. Okay. But the thing is that over there इक्वेशन हमारे लिए सिंपल हो जाते हैं, इसको रिजॉल्व करना सिंपल हो जाता है हमारे लिए, एक्स और वाई डायरेक्शंस हमारे माइंड में इमेजिन करना इजी हो जाता है, लेकिन व्हाट वी गेट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक स्टेप और ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. सो यू कैन गो फॉर दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन पार्ट एज वेल. ओके. नाउ ये तो आपका हो गया नॉर्मल थ्रस्ट का. नाउ I will write down equation for that as well. Huh? For those people who want that particular solution, I will write down equations for that as well. Okay. So for radial shear, we are going to have summation Fy is equals to 0 because we are considering radial shear in the y direction. So for summation Fy is equals to 0 minus the radial shear. So radial shear direction we are considering in the downward direction. So minus our radial shear which is acting. Then what are the other forces which are acting over here? So at this support, we have this 144. So in y direction, if I want to convert, I have to take this in vertically downward direction. So minus 144 cos of, sine of theta, minus 144 sine of theta, plus 180 cos of theta, plus 180 cos of theta. So minus 144 sine theta plus 180 cos theta, and then there is also one more force which is acting over here. Okay, that force, now this is vertically upward, this is vertically downward. So converting this is going to give me sine theta. So with respect to x direction, this is making an angle of 90 minus theta. Making it with respect to y, it is angle theta. So I'm going to have cos of theta. So 100 cos of theta
100 cos of theta in the downward direction, so negative. So minus 100 cos of theta is equals to 0. Now rearranging the terms, we have radial shear is equals to 180 cos theta minus and plus, we are going to have 80 cos of theta, okay, plus 1 and then minus 144 sin theta. Putting the values, 80 cos of 25.92 minus 144 sine of 25.92. The answer that you are going to get is around 9 kilonewton. Are you getting it? Everyone, please check. Yes, sir. Okay, 9.007. Yes, correct. 9.007. आ रहा है आंसर? ओके. Yes, sir. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, ये डायग्राम अभी थोड़ा बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया है, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल एक्स वाई प्लेन नहीं कंसिडर किया हमारा, हमने उसकी जगह पे इंक्लाइंड एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया, और इंक्लाइनेशन का जो प्लेन था कितना इंक्लाइन रखना है उसको हमने एंटी के डायरेक्शन और आर एस के डायरेक्शन से रखा, ताकि मुझे एंटी और आर एस का कंपोनेंट ना निकालना पड़े. अभी इसी चीज को हम लोग यहाँ पे फिर से करते हैं, ठीक है. लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंसिडर करेंगे, नॉर्मल वाला हमारा, और एंटी को हम लोग इस तरीके से कंसिडर करेंगे और इस तरीके से करके देखते हैं हम लोग, ठीक है. सो लेट अस डू इन दैट मैनर. तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. इफ आई डू समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स डायरेक्शन के अंदर 144 है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है. फिर हमारा आएगा माइनस एन टी, ठीक है. एन टी को आप एन वर्ड या थ्रस्ट वर्ड या कोई भी कोएफिशिएंट आप दे सकते हो, ठीक है. नॉर्मल थ्रस्ट के लिए आप कोई भी उसको एच या वी इस तरीके से कोई भी आप डिनोटेशन दे सकते हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग, अगर आपको दो कोएफिशिएंट कंफ्यूजिंग लगते हैं तो, ठीक है. सो कॉस ऑफ 25.92 एंड देन आर एस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस आर एस, sorry, it is going to be plus rs sine of 25.92 is equals to 0. Okay, so this is your equation number 1. You can go for summation fy is equals to 0. For summation fy is equals to 0, we have va which is acting in upward direction, so 180 kilonewton which is acting in upward direction, and minus nt which is acting in the component y component of nt which is going to act in downward direction, sine of 25.92. Then rs, again it is acting in the downward direction, so minus rs cos of 25.92 is equals to 0. This is your equation number 2. Solving equation 1 and 2 simultaneously. Okay, so if you solve this equation 1 and 2 simultaneously, how many coefficients you have? 1, 2 variable, 1 variable, 2 variable. Okay, so you can put this as a, you can put this as b, you can put this as a, this is b in your calculator. Calculator में रहता है ना ax plus by plus c, तो इस फॉर्म के अंदर आप उसको कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो and you can get the value of nt and rs. Okay, so by this formula calculate the value of nt and rs and check if you are getting the same answer. Please check if you are getting the same answer or not. ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोग भूल गए, समेशन एफ आई के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक 100 का फोर्स भी ऐड करता है, ओके, जो कि हमारा यूडीएल है 20/5. Please check if you are getting the same answer or not. Okay, is it clear to you how to calculate the value of normal thrust and radial shear?
clear to you how to calculate the value of normal thrust and radial shear? Okay, normal thrust क्या होता है, radial shear क्या होता है? Is it understood by everyone? See, this was the first problem that we solved. So Sir, summation Fy में y is it RS cos 25.92? ओके, सो समेशन के अंदर आर एस या रेडियल शेयर का हमने कॉस क्यों लिया? अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, इसका अगर आप एंगल देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका एंगल कितना है? दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा. डू यू एग्री? Yes, sir. So if I want the y component over here, if I want this component over here, I need to rotate it in this direction. So the y component is going to be rs. If we rotate in the direction of theta, we get what? Cos of theta. So that's why I've considered rs cos of theta. Try to understand कि y डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन होगा और x डायरेक्शन में जा रहा है तो cos होगा, ऐसा नहीं होता है. हम किस डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहे हैं उसका कंपोनेंट निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है. अगर वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा तो हमारा आएगा cos थीटा. अगर वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ 90 माइनस थीटा तो फिर sin थीटा आएगा. बेसिकली इट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा. सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin theta. Okay, is it clear? Yes. Okay, is it clear everyone? यस सर. Yes, sir. ये हमारा टोटल सॉल्यूशन है जो हमने किया अभी. ओके, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं. ओके, हमने बात किया पहले कि भाई रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है. ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट होता है आपका एक्शियल फोर्स और रेडियल शियर इज द शियर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग. नॉर्मल और रेडियल वर्ड इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि एक सीधा बार नहीं है, ये एक कर्व्ड बार है. तो उसके जो डायरेक्शंस है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एडजेक्टिव्स उनके सामने लगाए हैं. यहाँ हमने उसकी बात की. उसके बाद में हमने हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट किया. ओके, प्रॉब्लम के अंदर हमारा 3 हिंज्ड आज जो है उसका क्वेश्चन था. हम लोग के क्वेश्चन के अंदर उसका डायग्राम और सब चीज़ दिया है. वी वर टोल्ड कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको डिटरमाइन नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर एज वेल एज एसी और बीसी के अंदर हमें डिटरमाइन करना था कि हमारे पे कितना फोर्स एक्ट करेगा. ओके, देन हम लोगों ने हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एंड समेशन एफ एक्स एफ वाई मोमेंट एट ए और आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी लेके हमने हमारे वैल्यूज डिटरमाइन की. ओके, वैल्यूज डिटरमाइन करने के बाद में वी बी वी एच का वैल्यू निकालने के बाद में हम लोगों ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की तरफ गए. फिर हमने उसमें पहले एसी वाला पार्ट कंसीडर किया. एसी वाले पार्ट के लिए भी मेड द डायग्राम. उसके अंदर हमने हमारे सपोर्ट रिएक्शन दिखाया. हमने देखा कि कौन सा किस तरीके से किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. वी जस्ट सिलेक्टेड एन हाइपोथेटिकल पॉइंट डी जिसके ऊपर के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा. वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट लिया एंड यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोगों ने पहले उसको हमने यहाँ पे वी ए इंटू एक्स एच इंटू वाई जो हमारे दो फोर्सेस थे उसके लिए हमने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लिखा. देन -20 इंटू एक्स ये यूडीएल का पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया. देन उस इक्वेशन में y को रिप्लेस किया 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर के फॉर्मूले से जो हमने सिंप्लीफाई करके लाया y का वैल्यू. फिर वो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, हमें बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट का इक्वेशन मिला विच इज 60x माइनस 5x स्क्वायर. वो इक्वेशन मिलने के बाद में हमने उसको डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेटेड इट विथ 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट. वहाँ से हमें लोकेशन मिला 6 मीटर जिसको हमने फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिला 180 किलोमीटर मीटर विच वाज पॉजिटिव. देन वी टुक दी सेक्शन बीसी. बीसी का पार्ट लिया और बीसी के पार्ट के अंदर हमने वहाँ पे डिटरमाइन किया. दिस वाज द फ्री बॉडी डायग्राम दैट वी कंसीडर एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम एच वी बी का वैल्यू और एक सेक्शन कंसीडर किया एट पॉइंट ई, डिस्टेंस एक्स एंड डिस्टेंस वाई. For this particular distance, we substituted the values into the equation for y and then we simplified the equation, derivated the equation with respect to x to get the value of x. Okay, for maximum bending moment. Then maximum bending moment is happening, we substituted into the equation for the bending moment and we got the value minus 180. Then we took the perpendiculars to the tangent at that location where we were determining the maximum bending moment and at that locations we got the value as plus 180 and minus 180 and we made the curve.
Because from point A to C there is a UDL which is acting, so the curve will be parabolic, and from point C to B the curve is going to be linearly varying because there is no load which is acting in that particular region. Okay, so the line is going to be a straight line. Okay, straight line. Now we went for the normal thrust and radial shear. Over here we found out the angle theta, which is the slope at this particular location for this curving line or curvature of this line. So we determine the curvature at this particular location by first taking dy by dx, substituting the value of y, derivating it with respect to x, then substituting the value of x, we got the value of tan theta. Then tan inverse of theta gave us the value of theta. So theta was very important for us. Then after this we again made the free body diagram over here for the mechanical solution for getting the value of nt and rs. Two solutions were considered. One solution was we change the slope of the inclination so that we directly get the value of nt and rs, and secondly we took our normal x and y direction where x was horizontal and y was vertical, and we got the simultaneous equations, and by solving the simultaneous equations we got the value of nt and rs. The important thing to remember was even for this free body diagram there was the part of the UDL which was acting, so we converted the UDL into a point load of 100 kilonewton, which is 20 into the 5 distance on which it is acting, and the point of application would be 2.5 from this side and 2.5 from this side. Using that we got the value. Okay, is it clear with everyone? Now let us discuss about three hinged circular arches. Okay, so what about three hinged circular arches? How can we solve problems related to circular arches, and what is the difference between a circular arch and a normal arch? So see, this is a circle. Okay, so a circle gives you the curvature of curvature. Okay, this curve is not similar to a parabola. This curve is a circular curve. So suppose this is the center point O. Okay, so this is your radius, this is your radius. Okay, when we talk about circular arch, that doesn't mean it is going to be a perfect semicircle. Okay, when we talk about circular arch, it doesn't mean it is going to be a semicircle. It is perfectly possible that a circular arch can be this. Okay, so this is your point A, this is your point B. So this curve is a circular curve. So because the curvature is circular, we call these arches as circular arches. Now, what is the difference between circular arch and a parabolic arch? First thing is obviously पैराबोलिक में पैराबोलिक कर्वेचर रहता है, सर्कुलर में सर्कुलर कर्वेचर रहता है, but except for that still there are certain more changes that are over here. Okay, so we'll go into those changes. Now the type of analysis we do for parabolic arches and for the circular arches is slightly different. Okay, वहाँ पे हम पैराबोला का जो फॉर्मूला लेते हैं y इज इक्वल टू 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है कर्वेचर का वो चेंज हो जाएगा. Method will be exactly same. Method is going to be exactly same. The only thing over here is you have to calculate first the radius of the curvature, then substitute the radius of the curvature into the equation for finding out the curvature. Okay, जो y का फॉर्मूला रहता है in terms of x, वो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको उसका जरूरत पड़ता है. Okay, so some sign conventions for this is also going to change and some formulas will change. Okay, so let us make a diagram for this and then I will give you the complete derivation for this part. Okay, so let us see that part for the derivation.
So this is your support A, and this is your support B. Let us make a line over here representing that they are in the same level. We have at the topmost crown, which is C, same. Now what we are saying is, we are not considering it to be a perfect semicircle. We are considering it to be a sector kind of a thing. So this is my location O. Now the distance from this point is going to be radius R, is again going to be radius R. This is also radius R. Okay, by the way, this is also from O to C is also radius R. Suppose I am considering a point over here. This point is E. For this point, let us have a few construction lines. Okay, so this distance of point is y and this distance is x. Now try to understand the only change in sign convention or any sort of thing that we are going to do right now is that we'll consider the distance of that particular section. जिस section की हम बात कर रहे हैं, जिस section को हम solve करना चाहते हैं या जिस section का हम curvature या जिस point का curvature निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट का y डिस्टेंस तो बेस से रहेगा, लेकिन जो x डिस्टेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द सेंटर, या सेंटर की जो लाइन है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वहां से हमें x का डिस्टेंस लेना है. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. नाउ वी कुड हैव टेकन द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस साइड आल्सो. It makes no difference. In mathematical terms, things doesn't make that much of a difference. You could have taken that and this you could have represented in some other manner. The curvature का equation same ही आता. लेकिन क्या होता कि अगर मैं इसको x लेता हूँ यहाँ से सेंटर से, तो मेरे लिए यहाँ पे सॉल्व करना, डिराइव करना इजी हो जाता है कंपेयर टू दैट. ओके, सो लेट अस पुट सम नेम्स ओवर हियर. तो ये E है तो इसको हम लोग F बोल देते हैं, ये पॉइंट को हम D बोल देते हैं. सो लाइक दैट, दिस इज लाइक दिस. सो आई नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन दी कर्वेचर. ये यहाँ पे मुझे कर्वेचर का इक्वेशन निकालना है. तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? सबसे पहले तो हम रेडियस को डिटरमाइन करेंगे कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है. अगर कोई सर्कुलर कर्व है तो सर्कुलर कर्व में रेडियस का इक्वेशन क्या रहेगा? ओके, सो कंसिडर ट्राइंगल OEF. We are talking about OEF. Okay, this triangle we are talking about. So for this particular triangle, by Pythagoras theorem, so by Pythagoras theorem, OE square is equals to OF square plus EF square. Okay, now think about it. OE square, O से E. What is the distance OE? OE is radius R. So this is going to be R square is equals to OF. O से लेके F का distance क्या रहेगा? Now see over here, one sign I have not shown you. This total distance from here to here is H. जो total height रहती है ना अपने इस, so we'll represent the total height as H. So to get the value of OF मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं पूरा रेडियस कंसिडर करूंगा. रेडियस में से H माइनस करूंगा तो D पे आऊंगा, और D से F का डिस्टेंस कितना है? Y है. So let me represent it in that manner. In bracket, total distance is R from O to C, then minus जो total height है C से D तक की, that is H, plus D से F का डिस्टेंस. So D से F का डिस्टेंस कितना है? Plus Y square plus EF. EF कितना है? EF is X. So X square. This is my equation number 1. Now I am going to consider triangle ADO
I'm going to consider triangle ADO, this blue triangle I'm going to consider. Okay, now for ADO, we are going to have by Pythagoras theorem OA square is equals to AD square plus OD square. Okay, so what is OA? OA is radius, R square is equals to AD. How much is AD? अगर total length L है, अगर total length, the total length of the parabola, if it is L, तो half length कितना होगा? L by 2, L by 2. So over here the value you are is L by 2 उसका square. Okay, plus what about OD? OD का डिस्टेंस हमने ये लास्ट सीन में यहाँ पे निकाला था. OD is total distance R minus the height. Okay, square. Now let us simplify this equation. So simplifying the equation, R square is equals to L square by 4 plus this is A minus B the whole square. So R square minus 2 RH plus H square. Okay, so you can see over here that this R square and R square will get cancelled out, and basically I want the formula for R. So getting the formula for R, we can have two RH. 2RH is negative, we can take it on this side, rearranging the terms. L square by 4 plus H square. Okay, so I want the value of R, so therefore R is equals to, I will take 2H on this side. So this is going to be L square divided by 8H plus H square divided by 2H. So H will get cancelled. It is going to be H by 2. Okay, this is a very important formula you have to remember. You can by heart it or you can derive it anytime you want. Okay, but remember this is the very important formula for circular arches. Now it is possible that they might ask circular arches or parabolic arches. Anyone can be asked, and both are going to take same time to solve. Okay, there is nothing like a circular arches को ज़्यादा time लगता है या parabolic को ज़्यादा time लगता है. Both are going to take same. Now we have just determined the value of R. Okay, now from equation 1. Equation 1 क्या था हमारा? R square is equals to R minus H plus Y square plus X square. अभी इक्वेशन 2 में से मैंने R का वैल्यू निकाला, इक्वेशन 1 में से मैं Y का वैल्यू निकालूंगा. तो Y का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे कोशिश करनी है कि इसको स्क्वायर में से निकालो, ये सब करो. तो कैसे हो? Y the whole square. Okay, so for that let us have, अभी मैं अंडर रूट डालता हूँ उसको, टेकिंग द रूट ऑन बोथ द साइड्स. सो अंडर रूट R square minus X square is equals to R minus H plus Y. Okay, I want Y on this side, so R minus H will go on that side. Okay, so R minus H, if it goes on that side, plus H. This is the value of Y, or this you can say is the equation of the curvature. Okay, this is the equation of the curvature. Now this is very important over here. अगर यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि मोमेंट इक्वेशन जब लिखते हैं तो y के टर्म्स में आता है, फिर y को हम x के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर उसके बाद में उसका डेरिवेशन करते हैं. तो जब डेरिवेशन करते हैं तो दिस इज अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x. दिस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x. सो अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव आपको निकालते आना चाहिए. ओके, सो सपोज हम बात कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. अगर मैं बात कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स.
प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट अबाउट सर्कुलर आर्चेस? Is it clear everyone about the circular arches? Yes, sir. Okay, now we'll conclude our session over here because I still had 2 more problems to teach you about the circular arches, but I think we'll have an extra lecture in this week somewhere wherever it is possible, or in the next session. Okay, wherever it is possible we'll try to have that, and we'll conclude the circular arches. Okay, so in the chat box you can put your attendance in the chat box of this, as well as I have already taken the attendance over here. Okay, so using the meet collector you can put it over here as well. Okay, so we'll conclude our session over here and see you next time. As soon as we conclude the session, I'm going to give you that particular tutorial, because when I came to know that this particular part of the syllabus is remaining, so because of that I had to take this extra part. Otherwise we would have started with our next module. Okay, so don't worry, we have sufficient amount of time for the 4th semester, so we'll complete our things accordingly. Okay, if there is any doubt you can WhatsApp me. Okay, or you can contact me personally as well as in the groups. So for anything else I will take your leave right now. So thank you very much. See you in the next session. Thank you, sir.